नमस्कार। मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 23 सितंबर शुक्रवार 2022 है। आज शुक्रवार था, बाजार का अंतिम दिन था इस सप्ताह के लिए। अब सोमवार से नए बाजार की शुरुआत होगी। आज बाजार में काफ़ी बड़ी मंदी छाई रही और हमने देखा कि निफ्टी 200 से अधिक अंक नीचे आकर बंद हुआ। और अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 8:20 शाम को, संध्या समय, तब अमेरिकी बाजार, यूरोपियन बाजार सभी काफ़ी नीचे हैं। और ये संकेत, अभी तो ये संकेत मिल रहे हैं कि हम सोमवार को फिर, हो सकता है 50, हो सकता है 100 पॉइंट के गैप डाउन से खुले, लेकिन ये बदल भी सकता है। अभी तो शुरुआत हुई है विदेशी बाजारों की। बात, बड़ी बात यह है कि रुख अब क्या है। तो देखिए, हमें किसी किसी एक प्रकार के करेक्शन में प्रवेश कर चुके हैं, ये तो तय है। 18,000 के पास हम पहुंच गए थे, वहां से हम 17,300 आ गए हैं। तो 700 अंकों की मंदी कोई नॉर्मल ऊंच नीच नहीं है, ये एक करेक्शन का भाग है। अब ये किस किस चीज का करेक्शन हो रहा है? मेरी समझ में हमने एक बहुत बड़ी तेजी देखी थी 15,300 से 17,000, माफ कीजिएगा, 18,100। ये लगभग 2,800 2,900 पॉइंट की तेजी थी। इसको एक बार राउंड ऑफ कर देते हैं 3,000 पॉइंट के लिए, वो क्योंकि वो सरल है समझने में। तो 3,000 पॉइंट की तेजी के बाद बाजार कम से कम 1,000 पॉइंट और हो सकता है 1,500 पॉइंट का करेक्शन ले। ये नॉर्मल करेक्शन माना जाता है। चूंकि हम इतनी जल्दी भागे थे, इसलिए 3,000 के 1,000 पॉइंट बड़े लगते हैं, लेकिन आप इसको कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में देखिए। 3,000 के 1,000 पॉइंट जाएंगे हम, फिर भी 2,000 पॉइंट ऊपर रह जाएंगे, या 3,000 के 1,500 पॉइंट जाएंगे। 1/3, एक तिहाई से 50% का करेक्शन स्वाभाविक और नेचुरल होता है। तो ये करेक्शन जो हम देख रहे हैं, ये कहाँ रुक सकता है? अगर 1,000 पॉइंट का करेक्शन हुआ तो 17,100 में, और 1,500 पॉइंट का हुआ तो 16,600 में। यानी कि आप ये समझ लें कि 16,600 से 17,100 के बीच में ये करेक्शन कहीं भी रुक सकता है। जिस तरह से ये तेजी से करेक्शन चल रहा है, ऐसा लगता है कि ये कहीं जाकर इस रेंज में जाकर रुकेगा, और उसके बाद कहीं साइडवेज मूवमेंट होने के बाद फिर देखते हैं बाजार क्या करता है। मेरी अपनी राय अभी भी यही है कि हम तेजी में हैं। हम चूंकि बहुत बड़ी तेजी खा चुके हैं 3,000 पॉइंट के कुछ महीनों में, तो उसी तरह का करेक्शन भी हमको बर्दाश्त करना होगा। करेक्शन के बाद मैं आशा करता हूं, अभी तक तो चार्ट्स पर मैं ये समझ रहा हूं कि तेजी का वातावरण वही रहेगा जो हमने पहले देखा था। उस तरह की भगदड़ मची हुई तेजी नहीं आएगी, पर बाजार बुलिश ही रहेगा। पर वो तो बाद की बात है। अभी हम किसी प्रकार के करेक्शन में हैं। इस करेक्शन का सपोर्ट क्या बनता है? इस करेक्शन का देखिए, सपोर्ट इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जो अहम सपोर्ट था 17,500 का, वो हमने आज तोड़ दिया। उसके बाद अब बाजार की इच्छा है कहीं रुक जाए। ऐसे है ना, हम चार्ट पर लाइनें खींचने लगेंगे तो कोई ना कोई सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन उससे कोई खास अर्थ नहीं होता है। अब ये जहां रुकेगा वही सपोर्ट है। तो बाजार को करेक्ट करने दीजिए, जहां रुक के सपोर्ट ले, साइडवेज जाए, रेंज बनाने लगे, वहां हम समझें कि इस करेक्शन का पहला लेग खत्म हो चुका है। फिर कोई रैली आएगी, फिर करेक्शन होगा, वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी बाजार जब तक न रुके तब तक खरीदारी नहीं बनती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक जरूर से कमेंट्स इसमें दीजिएगा, आपके कमेंट से मेरा उत्साह बनता है। इसके बाद अंग्रेजी वाला सेक्शन शुरू होगा। Good evening. I am Sudarshan Sukhani, and today is September 23rd, Friday, 2022. Today is also the last day of the trading week, and the new week will start again on Monday, on 26th September. Today was not a good day for the bulls, and since most people are bullish and hold shares, I can say that it was not a very good day for the markets as such. The Nifty fell another 200 points, and it fell decisively below 17,500, all the way down to 17,300 and odd, which tells us that the strong support of 17,500 has broken once and for all. In the short term, doesn't mean it will not come back again. In the short term, that support has broken, and we are now looking at something else. So what is the view for the market? The market view is simple. We had a big rally, let's say from 15,200, 300 to 18,100. It's about 2,800 points. I'm rounding it off to 3,000 points for the sake of convenience. We had a rally of 3,000 points in a very short period of time. It was a blistering rally. You did not know what happened, and the market went up dramatically. But
If you have a rally like this, be very sure that the decline will be almost similar, and that is exactly what we are now facing. We are having a sensational and a waterfall decline. That's also normal. You have these big staircase rallies, big sharp rallies, and then you have a waterfall decline. In my view, the decline is only a correction of the ongoing bull market. Because the rally was very strong, the decline is strong, therefore it is hurting us a lot. Had the market gone up 500 points up, 200 points down, 500 points up, 200 points down, we would have been very happy because 200-300 points down is nothing. We would not even know that the market is correcting. Because the market decided to go 3,000 points up, now be prepared for the downtrend, 1,000 points down or whatever. So where exactly can this correction come to an end? Let's say that the rally was 3,000 points. So usually there is a perception that the correction should be at least 1/3 of the up move, 1,000 points in this case. So the earliest the rally will come to an end is somewhere around 17,100, 100, 200. A more normal correction will take you to 50% of the up move. That's about 1,400 points. So 1,400 points from 18,100 means 16,700. So the range in which this correction will come to an end is 16,700 to 17,100. Now these are only numbers. We have no way of knowing this is exactly what will happen. It may something very different may come about, but we are just having a view. So this is the range in which the correction will end. The chances are that after this sharp decline, we will probably have a rally again, and the next leg of the final leg of the decline will not be a sharp decline, it will be a choppy decline, which means essentially there is a theme, there is a theory that corrections are alternating in nature. If the first leg of the correction is sharp, the next leg of the correction will be choppy, not sharp. Yes, you can think of it that way. So the view is currently expect the markets to stabilize and then to stage some kind of a rally, which eventually should be sold into for the last leg of this correction. For Monday, I would think that the market is not giving us any signs of life so far. If Monday shows some stability, then it may be possible to go long in the afternoon on Monday. Otherwise, we step aside, waiting for stability, at which point we take a call on the short-term trend. Thank you for watching this video. Please give your comments every day and whatever you feel about. We'll meet again. Jai Hind.